Namaskar, Suraj Singh. Issue of Rafale is nothing to the politics. A report has come and been tabled in Parliament in relation to Rafale. Comptroller and Auditor General of India has submitted the report. Well, I understand that this report is just to fulfill formality that was required, and this government directed CAG not to include the prices. If prices have not been included in this report got no professional meaning at all. Certain issues which are under conflict must be included but not cared for. I remember reports submitted by CAG in relation to 2G's so-called scandal. Was it design report? Was it plotted report? Same thing applies to this one. Because CAG was directed by Ministry of Defense not to include pricing report. I cannot understand what purpose does this report serve. Dispute still goes on, and report says prices have been downed in comparison to what UPA government agreed for. It says 2.5% down. I can't understand this also. If you can understand, better. If prices have been downed, this means it is good marketing. And why quantity to purchase was reduced from 128 to 36? That is a question mark. It's a common sense. If you need 128 units for your country or for our country, and you buy 36, this is not a good marketing technique tendency. In place of 128, you should have gone for 150 rather to save money. This means there is no saving. This is just a drama. And on top of that, pricing is one issue. Second issue is why no bank guarantee? Why no sovereign guarantee? Why no performance bond? This had been included in previous deal. Why concessions have been granted to dissolve? This is called concession in contract language. You cannot ignore bank guarantees. You cannot ignore performance guarantee. You cannot ignore liability, accountability, binding. Suppose something happens negatively in future on this contract performance, who shall take liability of that? Of course, country shall take liability, but who will be accountable? Well, we have to take both plus and minus points on such deals. These are mega deals, these are not small deals. Performance bond is very important. Bank guarantee for other requirements also amount to importance. Why these documentation were neglected? There would have been expenditure on documents, bank expenditures, liaison expenditures, composition expenditures. Those savings have gone to party two, and that is the salt. They have made these savings at cost of our country. It is a question mark. Nothing to do any politics in this. Why did government of our country accept such non-documentation? What benefit does it provide to us? There is no change in delivery time frame. Last plane shall be delivered at end of 10 years. What quality, what value has been added to this contract? If we had some benefit, I would have welcomed that. But benefit has been eroded. Only price is not an issue. Other issues are there. So many significant clauses have been given concession with, have been taken out. So this cannot be called a perfect deal. There has been no details given related to subventing clause. Subventing means they call it offset clause. Okay, offset clause. If nothing has been so then what meaning does this report serve? Only CJ can tell. This is the formality before elections. There is no urgency of deal at this time. If it's not complete, incomplete work has no meaning at all. Why to keep masses in dilemma, in abeyance of understanding and deciding? As a professional, I cannot decide
What is the meaning of this report? Only government can understand, or these political fools can understand. I cannot understand. Who wanted only difference in prices? If you are scrutinizing some documents, some contract, keeping aside secrecy clauses, don't give anything which is related to secret, but non-secret conditions must be analyzed properly, screened out, and put properly. CAG has not done professional work. I don't understand how can such a top official release incomplete documentation. बड़े दुख की बात है कि सीएजी की रिपोर्ट आ गई है रफाल के बारे में और यह रिपोर्ट कोई कंप्लीट नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। कुछ उन्होंने प्राइस कंपैरिजन दे दिया है, बस इतने परसेंट पहले वाले प्राइस से डाउन उन्होंने कहा है 2.5% ऑन एवरेज कम प्राइस दिया गया है। अरे भाई साहब, अगर कम प्राइस दिया गया है तो आपको 128 की जगह 150 लेने चाहिए थे, आपने 36 क्यों किए प्रधानमंत्री साहब? अगर आपको मार्केटिंग अच्छी करनी आती तो आप 36 ही क्यों लेते? आपको 150 लेने चाहिए थे। पिछली सरकार ने तो लुटाया पैसा, आपने तो बचाया ना, जितना भी बचाया। ये क्या मतलब इस बात का? आपने किस अधिकार से परफॉर्मेंस बॉन्ड को कंसेशन दे दी? आपने सॉवरेन गारंटी को कंसेशन दे दी? आपने दूसरे क्लॉजेस को कंसेशन दे दी? किस लिए कंसेशन दे दी भाई? कोई एंटी करप्शन क्लास को कंसेशन दे दी? ये कंसेशन किस खुशी में दी आपने? कल को नेगेटिवली सोचने को ऐसी बात हो जाती है कि परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? कल को डिलीवरी टाइम में नहीं होती है तो आपने कोई एक्सटेंशन क्लॉज उस पर लगाया नहीं है, कोई पेनल्टी क्लॉज लगाया नहीं है। आपने ये नहीं कहा कि हमको इतनी लिक्विडेशन दी जाएगी। कुछ क्लॉज है उसके अंदर? एलडी कोई क्लॉज है? कोई क्लॉज नहीं है, सब कंसेशन दे दिया गया। फिर ऐसी ये डील है, इसको आप डील कहेंगे या कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे इसको आप? जब ये चीज़ें नहीं है, अगर आर्बिट्रेशन भी कल को होती है तो उसमें क्या होगा? सोचिए आप जरा। आर्बिट्रेशन का मतलब डिस्प्यूट कोई हो जाता है तो रिजोल्यूशन को आर्बिट्रेशन कहते हैं। अगर कल को कोई ऐसी बात हो भी जाती है, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, किसी को अपॉइंट करते हैं, उसका क्या फायदा होगा? कौन सोल्यूशन देगा उसका? क्योंकि कंडीशन से नहीं है, खाली प्राइसेस हैं, और खाली प्राइसेस से फैसला बाकी चीज़ों में लिंक करके होता है। यहाँ तो है ही कुछ नहीं। और सीएजी ने ऐसी रिपोर्ट सबमिट कैसे कर दी बिना पूरी स्क्रूटनी किए, पूरी स्टडी किए, पूरे एनालिसिस किए, पूरी स्क्रीनिंग किए? क्या हक है सीएजी को ऐसी रिपोर्ट देने का? खाली फॉर्मेलिटी पूरी करनी थी। अगर फॉर्मेलिटी पूरी करनी तो अलग बात है, लेकिन हम फॉर्मेलिटी को देखने के लिए नहीं बैठे यहाँ। हम सिटीजन हैं, हम जानना चाहते हैं सच क्या है। आप सीक्रेट क्लॉज मत दीजिए, लेकिन बाकी चीज पूरी तो दीजिए ना। आप जस्टिफाई तो कीजिए अपने वर्क को। जैसे 2G में आप जस्टिफाई नहीं कर पाए थे और वो फेल हो गया था, इसी प्रकार से ऐसा ही ले लगता है कि आपने इलेक्शन से पहले बस कहने के लिए हमने सस्ता सामान खरीदा है, ऐसे जैसे रिपोर्ट लिखवा दी है। अपने आप ही सीएजी है, अपने आप ही गवर्नमेंट है, अपने आप ही सब कुछ है। आप सीएजी तो नाम मात्र का एक डिपार्टमेंट रह गया है। आपके कहने से आपने क्यों डायरेक्शन दी थी उनको? आपकी डिफेंस मिनिस्टर ने डायरेक्शन क्यों दी थी कि आप इसे प्राइस नहीं इंक्लूड करेंगे? क्यों नहीं करेंगे प्राइस इंक्लूड? तो कोई फायदा नहीं है इसका। ये रिपोर्ट खाली पेपर वर्क है, आपको दे दिया गया, आपने फिर न्यूज में दे दिया और हो गया बस। क्या फायदा? ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई फायदा नहीं इसका। सीजी का भी टाइम खराब हो रहा है, पब्लिक का भी टाइम खराब हो रहा है, आपका टाइम तो खराब हो ही रहा है। एनी हाउ, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने अब कर दिया है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये मीनिंगलेस डील है, कोई मतलब नहीं है इसका। पब्लिसिटी के लिए ठीक है, हो सकता है, लेकिन देश के लिए और हमारे समाज के लिए, हमारे उसके सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। धन्यवाद। जय भारत। थैंक यू वेरी मच।